Hello students, we have learned the two methods of comparing the fractional numbers, that is comparing by cross multiplication method and by taking LCM. So we are doing worksheet number 2, question number 2, in which we have to compare the fractions by taking the LCM. That is the second method. And we have done the three parts, that is A, B and C part. Let us do the next parts of this question. So we are on D part. So we will do E and F part for revising it. That is 3 upon 5 and 5 upon 6. So here what we have to do, we have to take the LCM. LCM किसका लेना है हमें? Denominators का. Because we have to compare the fractions by taking the LCM. That is the second method. So first of all, take the LCM of the denominators of both the fractions, that is 5 and 6. So here we have to use only prime numbers, prime factors. So the fact you know that 5 is a prime number. So 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है. So we can write 5 ones are 5. Then 6 5 के टेबल में नहीं आता है. So we will write as it is. Then 6 comes in the table of 2 because it is an even number. So 2 3s are 6. And then 3 is a prime number. So 3 ones are 3. So now LCM is equal to 5 into 2 into 3. That is 5 2s are 10 and 10 3s are 30. So our LCM is 30. Now what we have to do? I hope the first step is clear. In first step, you have to take the LCM of the denominators. Now in second step, what we have to do? We have to make these fractions like. हमें इन fractions को like बनाना है. उसके लिए क्या करेंगे हम? First of all, we will write the first fraction. And we have to recite the table of the denominator till LCM. So what is our LCM? That is 30. तो हमें 5 का टेबल रिसाइट करना है LCM तक, 30 तक. तो 5 के टेबल में 30 कहाँ आता है? 5 6 30. तो जिससे हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है, उसी डिजिट से हम, उसी नंबर से हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो 5 6 30 और इधर 3 6 18. नाउ the second fraction, that is 5 upon 6. Now again we have to recite the table of denominator till LCM. So what is our LCM? That is 30. So 6 के टेबल में 30 आता है हमारा. 6 5s are 30. 5. Now 5 से हमने मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर को, तो हमें न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5 5s are 25. Now you can see here both the fractions become like because denominators are same. So now we can easily compare the two fractions, क्योंकि जो like fractions होते हैं उसमें हम चेक करते हैं कि किसका न्यूमरेटर ग्रेटर है और किसका स्मॉलर, and then we can easily compare them. So 18 and 25. So which one is greater? 25. So 25 is greater than 18 upon 30. Now 18 upon 30 किससे बना था हमारा? 3 upon 5 से. So we can write 3 upon 5 is less than 25 upon 30 बना था 5 upon 6 से. 5 upon 6 because we have to compare these two fractions. तो हमें आंसर भी इन्हीं two fractions में ही निकालना पड़ेगा. So this is the answer. Let us do one more question so that it will be clear to you. That is F part. 2 upon 9 and 3 upon 7. Now what we have to do? What is our first step? So here we have to take the LCM. So LCM of 7 and 9 or 9 and 7. So 9 हमें प्राइम फैक्टर्स ही यूज करने सिर्फ. सो 9 कम्स इन द टेबल ऑफ 3. 3 3s are 9 और 3 के टेबल में 7 नहीं आता है, तो वी विल राइट इट एज इट इज.
Now 3 is a prime number, so 3 सिर्फ 3 के टेबल में आएगा. 3 1s are 3. Again 7 is not coming in the table of 3. Now 7 is also a prime number, so 7 1s are 7. और कब तक हम करते हैं? जब तक लास्ट में हमारे सारे नंबर्स 1 नहीं हो जाते. Now the LCM. So 3 into 3 into 7. So 3 3 are 9 and 9 7 ja 63. So 63 is our LCM. Now we have to make the fractions like, so 2 upon 9 first fraction, और डिनोमिनेटर का टेबल हम पढ़ेंगे LCM तक. What is our LCM? That is 63. So 9 7s are 63. So हम न्यूमरेटर को भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 7s are 14. So it becomes 14 upon 63. Now 3 upon 7 next fraction. अब डिनोमिनेटर का टेबल कहाँ तक करना है हमने? LCM, that is 63 तक. So 7 9s are 63. अगेन जिससे हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है सेम उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो 3 9s are 27. So 27 upon 63. Now both the fractions become like. Now it is very easy to compare the like fractions. So 14 upon 63 and 27 upon 63. So which one is greater? हमें सिर्फ न्यूमरेटर्स चेक करने हैं. जब हमारे डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो हम न्यूमरेटर्स को चेक करते हैं. जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होता है वो फ्रैक्शन भी ग्रेटर होता है. सो हियर 14 अपॉन 63 इज लेस देन 27 अपॉन 63. नाउ दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. क्वेश्चन हमारा 2 अपॉन 9 एंड 3 अपॉन 7 में था. तो हम देखेंगे कि 14 अपॉन 63 किससे बना था? 2 अपॉन 9 से. सो 2 अपॉन 9 इज लेस देन 27 अपॉन 63 बना था 3 अपॉन 7 से. सो दिस इज अवर आंसर. Now come to the question number 3. Here we have to compare the following pairs of fraction numbers. Now here the questions are in mixed form. Mixed number is there. 5 and 1 upon 2. In other previous first and second question mixed numbers नहीं थे. तो what we have to do, एक step हमारा बढ़ जाएगा. Otherwise we have to compare by any one method. जो हमने 2 methods ऊपर किए थे, one by cross multiplication method and second is LCM by taking LCM. तो हम कोई भी इसमें से method use कर सकते हैं because यहाँ पर कोई भी method mention नहीं किया है. So we can use any method which one is comfortable to you, easier to for you. So अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इजी लगता है आप वो मेथड यूज कर सकते हैं. टेकिंग एलसीएम यूज इजी लगता है तो आप वो यूज कर सकते हैं. बट बिफोर दैट आपको ये मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. लेट अस डू सम एग्जांपल, 1 or 2 part of this question. So question number 3. Question number 3, that is, compare the following pairs. Compare the following pairs of fractional numbers. So now take the first one, A part. 5 and 1 upon 2 and 5 upon 2. So first of all, we have to convert this mixed number into improper fraction. So you all know how to convert these fraction. First of all, we have to multiply this whole number and denominator, and then we have to add the numerator with the product. So 2 5s are, or 5 2s are 10, and 10 plus 1 is 11. So it becomes 11 upon 2, और denominator हम denominator की जगह पर ही लिखते हैं. So in this way we have converted this mixed number into improper fraction. First of all, multiply whole number and denominator part. So 5 2s are 10, और प्रोडक्ट से जो भी प्रोडक्ट आया 10 में हम न्यूमरेटर को प्लस करेंगे, that is 1. So 10 plus 1 is 11. So 11 upon 2 and 5 upon 2. We have to compare these two fractions. So this is very easy. Now here
मेथड इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, सो हम इसको डायरेक्टली क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे. वाई, हाउ? बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम, बोथ द फ्रैक्शंस आर लाइक, और लाइक फ्रैक्शंस के लिए हमें कोई भी मेथड यूज करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली इसको कंपेयर कर सकते हैं. जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, जिसका स्मॉलर होगा वो स्मॉलर होगा. सो डायरेक्टली वी कैन कंपेयर इट. 11/2 इज ग्रेटर देन 5/2. Why we have not used any method, that is cross multiplication method and LCM method? Because here in question it is asked to compare the pairs of fractional number. हमें कोई मेथड नहीं बताया था कि कौन से मेथड से करना है. सो हम डायरेक्ट चेक करके भी हम इसको कर सकते हैं, बिकॉज बोथ आर लाइक फ्रैक्शंस. लेट अस डू C part. B part is also same because that is also a like fraction. So we will do the C part. In C part we have to compare 19/7 and 2 whole 1/6. 2 and 1/6. Now first of all, what is our first step? We have to convert this mixed number into improper fraction. So 19/7 and first of all we have to multiply these two numbers, so 6 2s are 12, and then add the product with the numerator. So 6 2 are 12, 12 plus 1 is 13/6. Now we have to compare these two fractions. So which method you would like to use, that is cross multiplication method or by taking LCM, that is up to you. So here I am using the cross multiplication method. So 19/7 and 13/6. So cross multiply it. So 19 multiplied by 6 and 7 multiplied by 13. So it's 114. 19 6 is 114. And 7 13 ja 91. So which one is greater, 114 or 91? So 114 is greater. So here the numerators are 19 and 13. So number having numerator, fraction having numerator 19 is greater than the fraction having numerator 13. So 19/7 is greater than 13/6. So in this way we can compare the fractions. So you can do the remaining part of question number 3, that is D, E and F part. Or the only thing is you have to convert the mixed number into improper fraction and then compare the fractions. Thank you.